academic English. So we learn the usage of academic vocabulary, and we also learn about effective reading techniques. In Unit 2, we learn about how to do the note taking and how to write the first draft, editing, proofreading, ये सब कुछ learn करते हैं. और जो यूनिट 3 होता है हमारा, यूनिट 3 में we learn formatting techniques. And in Unit 4th, we talk about the usage of digital tools, digital editing and paraphrasing tools. तो ये कुछ vocabulary ना बहुत repeat होती है. आपको उसका usage समझ लेना है. Paraphrasing क्या होता है? Paraphrasing is when you write something in your own words. Right? That is paraphrase. You have read something, right? Now you try to put it across in your own words. That is known as paraphrasing. Are we clear about this? Right? So Yes, brief ma'am. idea. I'm sorry. Yeah. Yes, ma'am. Brief idea you have got I'm about the subject and roughly about the syllabus. Rest I had yesterday shared with you the PPT, induction PPT possibly, or the induction lecture, right? You can go okay. through it, understand it better, and be very participative in the classes. Ask questions. What are your queries? Rather than messaging or calling, because we have lot of responsibilities, so sometimes we might not be able to attend to your calls or to your messages. The online classes platform is the best time and place for you to ask about your queries. Yes, Farkanda, any query you have? Actually, I just wanted to tell that we are yet to receive the induction PPT that you're talking about along with the syllabus. So you are not in the essential of thesis writing February and March No, group? ma'am, I'm in the group, but I don't think we have received it. No, no, no. It has been shared. I would reshare. It has been shared. Keep a look out of it. The recorded lecture has been shared. Okay? Right? Anybody else? No, ma'am, I'm not talking about the recorded lecture. I'm talking about the induction Induction PPT, which PPT. That I would be sharing because I'm out of station. So I would be sharing as and when I get the time. I would mail myself and then share it with you on WhatsApp. Yes. Anybody else? Anything else? So now we are going to study about the importance of punctuation, right? Mastering punctuation marks. This is a comprehensive overview of punctuation marks. Now, what is comprehensive? Which includes everything. That is comprehensive. It is an academic English word. It is part of academic vocabulary, right? To enhance your writing with clarity and effectiveness. Your writing has the required clarity and it is also very effective. Let's move further to the next slide. Anytime you are not able to see the screen, you check your connection and also inform me, right? What is, first of all, what is the definition of punctuation? Like I said, there is, you don't need to buy a book on this subject. The content would be shared in the form of PPTs and they are sufficient for you to attempt your final examination. So what is punctuation? Punctuation refers to symbols used in writing. They are not, hello? Ma'am, sorry to interrupt you. Ma'am, recently I will join because other classes will be going on. Please revise the back, ma'am. I have just started. I just started. We are doing punctuation marks. So the first slide which comes is definition of punctuation. Punctuation refers to the symbols used in writing. What is the purpose of these symbols? They bring in meaning and structure and also bring in clarity.
So these symbols, they help the readers understand the meaning which is intended, the meaning which is wished to be conveyed. And punctuation also establishes a relationship between different parts of a sentence. So these PPTs are sufficient for you to attempt your MSTs as well as annual examination. You should read the definition of punctuation about 5, 6 times. Try to incorporate all the keywords, and with the usage of keywords, explain very clearly, define very clearly what is punctuation. Next is, what is the importance of punctuation in communication? Punctuation is crucial in effective communication as it aids means it helps in conveying the writer's tone and intent is purpose, what the writer wishes to convey. Proper punctuation will help prevent misinterpretation and would also enhance or upgrade the clarity of the message being communicated. I believe you are okay with both of this. First, what is the definition of punctuation? And second, what is the importance of punctuation in communication? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, yeah. So now the third is like we are giving an example of miscommunication to explain that how punctuation is very important. Now let's pay attention on the phrase, let's eat, comma, grandma. Right? And in comparison to this, there is a phrase without the comma after eat. Let's eat grandma. Now, it is very commonsensical for us to understand that the first phrase, let's eat grandma, means we are talking about grandma. Let's have the meals or let's enjoy the food or the drink or whatever is offered. Whereas, second, let's eat grandma minus or without the comma, it means that all of us should eat grandma. So it becomes very comical and funny also, and the intended message is lost when we do not use the required punctuation mark. So this example, it illustrates how a simple comma can change the entire meaning of a sentence, right? Highlighting the importance of correct pronunciation in avoiding misunderstanding and misinterpretation. Right, let's come next. Understanding the full stop, or we also call it as period. Right, it is primarily, that is basically used to signify the end of declarative sentences. Any time when a particular meaning is fully conveyed, we put a period or a full stop, a complete thought once it is expressed. So it provides a clear stopping point for the reader that one idea or one thought process is over. Now you need to proceed further to next. Right. So one of the main functions of the full stop is to conclude a declarative sentence. For example, when we say she went to the store, so the meaning is totally conveyed that what is she doing? Where did she go? She has already been to a store. She went to the store. So there is a complete idea, and the complete idea is punctuated with a full stop to indicate its conclusion. Punctuation is also used in short forms and abbreviations. For example, doctor, dr, period. So etc, etc, etc. So when we write the short form or abbreviation of etc, we put etc, period. So this usage also helps to denote that the abbreviation represents a shortened form of a longer term.
Examples of usage, for example, I say I was born in 1998, period, or a full stop. So this period or full stop marks the end of statement that provides a factual information. It is also a declarative sentence. So such example illustrate how the full stop is essential for clarity in writing. I believe it is clear. Yes, to the class, I believe it is Yes, clear. ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, Okay, Yes, so ma'am. ma'am. this was the first punctuation mark or symbol. We proceed further to the next. Coming to comma, understanding the comma. ठीक है, हाँ, when do we use comma? When we have to separate lists, when we have to separate items in a list. Commas are used to separate items within a list, making it clear which terms are different from others. For example, when I say I bought apples, comma, oranges, comma, and bananas. Even before and we use a comma. ठीक है, the comma helps to delineate, that is make distinct each fruit, enhancing the readability and the understanding that what all amongst the fruits was bought. Clear? I bought apples, comma, oranges, comma, and bananas. बिफोर कंजंक्शन दैट इज एंड बट ऑल्सो. बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमने एंड यूज कर लिया, हमने बट यूज कर लिया, अब तो हम कॉमा नहीं यूज करेंगे. बट वो जो लिस्ट होती है जिसमें एंड आता है, उसमें लिस्ट में हर आइटम बहुत डिफरेंट और डिस्टिंक्ट होता है, तो इसलिए हम एंड या बट लगाते हैं. जैसे कि आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, कॉमा, बट इट स्टार्टेड टू रेन. मैं वॉक के लिए जाना चाहता था, बट बारिश होना शुरू हो गई. आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स ऑल्सो, कॉमास शुड फॉलो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और phrases to signal the start of the main clause. जैसे हम बोलते हैं आफ्टर डिनर वी वॉच्ड अ मूवी, सो द मेन क्लॉज इज आफ्टर डिनर. ठीक है, वी वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज वॉच्ड. द कॉमा इंडिकेट्स अ ब्रीफ पॉज. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉमा का मतलब होता है ब्रीफ पॉज. छोटा पॉज के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. और जब हम कॉमा यूज करते हैं तो हम एक तरीके से स्टेज सेट कर देते हैं फॉर द एक्शन विच फॉलोज द कॉमा. ठीक है, इज इट राइट? शुड वी प्रोसीड फर्दर? Now come to the Yes. question mark. Usage of the question mark. जितने भी PPTs है बहुत sufficient है आप 10 नंबर का 12 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए. जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. थोड़ा आपको बीच में चॉइस होता है, फुल चॉइस नहीं होता, देयर इज सम चॉइस, राइट? So you are given almost 8 questions, and you have to select 5 questions, right? And you can choose only once 2 questions from the same unit. Like आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप यूनिट 1 से भी 2 चूज कर लो, यूनिट 2 से भी 2 चूज कर लो, और उसके बाद कहीं से आप एक यूनिट से एक ही बार 2 क्वेश्चंस ले सकते हो. समझ आ गया आपको? हैव यू अंडरस्टूड? Have you Yes. understood the pattern of the Yes. annual examination? ठीक है, 4 यूनिट होंगे, 4 यूनिट में से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन होके हमारे 8 क्वेश्चन बन जाएंगे. आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और आपके पास एक कंडीशन है कि आप एक यूनिट से एक ही बार 2 क्वेश्चन कर सकते हो, यू चूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन मार्क. It is primarily used to indicate a direct question. It is an essential punctuation mark that signals to the reader that an inquiry is being made. ठीक है, placement of the question mark. Typically, the question mark is placed at the end of a sentence. ठीक है, allowing the reader to recognize the interrogative nature of the statement. जो statement है उसकी nature interrogative है, कुछ पूछा जा रहा है. ठीक है, example of the question mark, where are you going? At the end of this statement there is a question mark. आप कहाँ जा रहे हो? Interrogative
negative nature. So this sentence directly asks for information from the person who is asked this question कि उसका destination क्या है. Another example, did you complete your homework? तो इसमें भी एक inquiry है, seeking confirmation whether the completion of the work, the task or the homework has been done or not. So these are two examples to understand the punctuation mark, that is question mark. Coming to the exclamation mark, जब कोई जो राइटर है किसी चीज में एक्साइटमेंट, सरप्राइज, अलार्म रेज करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करता है. एक्सक्लेमेशन में स्ट्रॉन्ग इमोशन होता ही है, चाहे सरप्राइज का हो, चाहे एक्साइटमेंट का हो, चाहे अलार्म का. नो 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 नो, डोंट गो देयर. ठीक है, ऐसे अलार्म का होता है. ठीक है, इट प्रॉम्प्ट्स इमीडिएट अटेंशन. ये अर्जेंसी इन कम्युनिकेशन को डिनोट करता है और इमीडिएट अटेंशन और एक्शन को कॉल करता है. डिस्टिंग्विशिंग इंपॉर्टेंट मैसेजेस, फॉर एग्जांपल, वाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, दैट्स अमेजिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क. दिस इज वन एक्सप्रेशन. स्टॉप, डोंट गो देयर, एक्सक्लेमेटरी मार्क आफ्टर स्टॉप. डोंट गो देयर के बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस. ठीक है. अब कल्चरल वेरिएशंस भी होते हैं. कई कल्चर्स में कई चीज डिनोट करती है एक्साइटमेंट, कई सेम थिंग इन अ डिफरेंट कल्चर might be taken very normally also. So this was about the usage of the third punctuation mark, that is exclamation. Coming to colon. Colon is two dots. The usage of colon, they are primarily, that is basically used to introduce a list, right? And they signal what comes next in a related clause. जैसे कि हम बोलते हैं she packed the essentials, उन्होंने सब essential item पैक कर लिए. तो कॉलन लगा के हम बताना चाह रहे हैं कि essentials क्या है? क्लोथ्स, कॉमा, शूज, कॉमा एंड टॉयलेटरीज. ठीक है. तो एक लिस्ट को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कॉलन से, कॉलन के बाद वो लिस्ट को हम ले आउट कर देते हैं. She packed the essentials, colon, clothes, shoes and toiletries. Another है जब कोई हम quotation इंट्रोड्यूस करते हैं. The teacher said. अब टीचर के डायरेक्ट वर्ड्स हम कोट कर रहे हैं. टीचर को कोट करने से पहले हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो ये जो है these are the 5 usages of colon. First of all, primarily क्या क्या इंट्रोड्यूस करता है? लिस्ट, एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेशन. ठीक है. फिर बताया लिस्ट कैसे इंट्रोड्यूस करता है, फिर बताया कोटेशन कैसे इंट्रोड्यूस करता है, फिर बताया है कि रिलेशनशिप कैसे डिपिक्ट करता है दो क्लॉजेस के बीच में. First clause sets up the expectation and the colon indicates an elaboration. जैसे हम बोलते हैं do good colon have good. ठीक है. तो दो चीजों के बीच में रिलेशन है. अच्छा करो और आपके साथ अच्छा होगा. Do good have good. तो ये दोनों जो क्लॉजेस है, ये दोनों जो दोनों क्लॉजेस के बीच का रिलेशनशिप है, वो एक कॉलन से एस्टैब्लिश होता है. Punctuation rule when using a colon, make sure that the clause before it is complete. ठीक है. कॉलन जो है वो उसके बाद भी कोई फ्रेगमेंट या इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला डू गुड हैव गुड. ठीक है. तो दोनों जो सेंटेंसेस को, एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करा गया है कॉलन से, वो कंप्लीट है. राइट. So coming next to the next punctuation mark, apostrophe. आपको पता है कहाँ कहाँ आप apostrophe यूज करते हो? possessive उसमें करते हो यूज, nouns में और pronouns में. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं this is John's book.
ठीक है, किसका किताब है, वहां पे आप एपोस्ट्रोफ यूज करते हो। कॉन्ट्रैक्शंस में भी यूज करते हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू के बाद ए मिसिंग होता है और आर ही सिर्फ आता है, और वो जो ए मिसिंग होता है वो एक कॉलन से अंडरस्टूड होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस में यूज होता है एपोस्ट्रोफ, और पोजेशन में दिस इज जॉन्स बुक। ठीक है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शंस में दिस वाज अबाउट द एपोस्ट्रोफ। कमिंग नेक्स्ट, सेमी कॉलन कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो उसके दो प्राइमरी पर्पसेस हैं सेमी कॉलन के। जो होता है, एक तो कॉम्प्लेक्स लिस्ट जब होती है ना, उसको डिस्टिंग्विश करता है एक सेमी कॉलन, एक नॉर्मल लिस्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स लिस्ट। ठीक है, और दूसरा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं ना, जो थीमेटिकली रिलेटेड होते हैं, उनको भी सेमी कॉलन जो है वो डिफरेंशिएट करता है। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो अपने आप में कंप्लीट है। सेमी कॉलन, आई कांट गो आउट टुनाइट, आज मैं शाम को बाहर नहीं जा सकता बिकॉज कल मेरा बहुत बड़ा एक इम्तिहान है। ठीक है, सेपरेटिंग कॉम्प्लेक्स लिस्ट आइटम्स जब होती है, ऑन अ ट्रिप we visited Paris, France, semicolon Rome, Italy, semicolon and Berlin, Germany। इसमें एक कंट्री है और एक कंट्री का कैपिटल है, तो लिस्ट जो है हमारी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं with a semicolon। I hope I am audible to each and everybody of you and there is no connection error. Yes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay. yes. Yeah. Next is your usage of the quotation marks। ठीक है, कोटेशन मार्क्स जैसे कि उनका नाम ही है कोटेशन मार्क्स, जब हम किसी को कोट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच जब होती है हमारी, तो वहां पे हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। शी सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स, आई लव रीडिंग बुक्स, कोटेशन मार्क क्लोज्ड। राइट, अब आप लास्ट में देख रहे हो कि डबल कोटेशन मार्क भी है और सिंगल कोटेशन मार्क भी है, बिकॉज सेंटेंस जो शुरू हुआ था वो सिंगल से शुरू हुआ था, तो वो पूरे कोटेशन मार्क्स विद इन कोटेशन मार्क्स है। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और कई जगह हम जब किसी पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसिस करना चाहते हैं तो भी हम उसको कोटेशन मार्क में डाल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं द वर्ड इम्पॉसिबल मीन्स समथिंग डिफरेंट टू मी, तो हमारा फोकस इम्पॉसिबल पे है तो हम उसको कोटेशन मार्क में डाल देंगे। कमिंग नेक्स्ट इज पेरेंथेसिस, दैट इज योर ब्रैकेट। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं और अपने फ्लो को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते बट एट द सेम टाइम कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो राउंड ब्रैकेट में आ जाता है, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। माय ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा इज विजिटिंग सून। सो हम अपने रीडर के लिए ये एक्सप्रेशन नहीं लूज करना चाहते कि माय ब्रदर इज विजिटिंग सून। ठीक है, तो हम जो ब्रदर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कनाडा में रहता है, उसको हम पैरेंथेसिस में डाल देते हैं। ठीक है, माय ब्रदर पैरेंथेसिस हु लिव्स इन कनाडा इज विजिटिंग सून। अब है हाइफन, दैट इज स्मॉल डैश, एंड डैश दैट इज अ लॉन्गर डैश। हाइफन्स कहाँ पे यूज करते हैं? कंपाउंड वर्ड्स में यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं वेल नोन। ठीक है, कंपाउंड वर्ड है, तो वहां पे भी हम हाइफन यूज करेंगे। मदर इन लॉ, राइट, डैश कहाँ पे हम यूज करते हैं? द प्रोजेक्ट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ठीक है, द डैश एम्फेसाइजेस लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो यहाँ पे डैश एम्फेसाइज करता है ड्यूरेशन ऑफ द कमिटमेंट। ठीक है, ठीक है, जब दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, आई न्यू द आंसर डैश बट आई हेजिटेटेड, तो यहाँ पे डैश एक कंट्रास्टिंग थॉट बता रहा है कि आंसर तो पता था बट हेजिटेटेड। सो दिस इज अबाउट द यूजेज ऑफ द हाइफन एंड द डैश। कमिंग नेक्स्ट इज एलिप्सिस, एलिप्सिस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जब एक थॉट जो होता है वो कंटिन्यूड होता है बट उसमें से हम सिलेक्टिव चीजें ही लेना चाहते हैं, तो वो हम कंटिन्यूएशन के लिए एलिप्सिस लगा देते हैं, थ्री थॉट्स। फॉर एग्जांपल एक कोट है, टू बी और नॉट बी,
मतलब इनडिसीजन का ये कोट इनडिसीजन डिस्क्राइब करता है, बट ये लंबा कोट है तो हमारा बाकी वाले कोट से कोई सरोकार नहीं है, तो हम वो 3 डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी का मतलब है कि मैं ये करूं या ना करूं, इनडिसीजन। ठीक है, सो इसमें हम एलिप्सिस का एलिप्सिस का यूजेज कर लेते हैं। अनदर एग्जांपल है आई एम नॉट श्योर, फिर आगे वाली जो बात है उसको हम कन्वे नहीं करना चाहते, हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है, तो हम उसके लिए भी डॉट 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 लगा देते हैं कि बात कंप्लीट तो नहीं हुई है, बट बाकी वाला जो थॉट है, बाकी वाला जो सेंटेंस है, वी आर नॉट रिलेटिंग टू दैट एट द मोमेंट। समझ आया आपको एलिप्सिस का यूजेज? यस Yes, ma'am. यस, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, I'm ma'am. not yeah, so this was about ellipsis. Coming next is punctuation mistake, common हम कौन सी करते हैं? ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं हम, it's और it's, एक विदाउट द एपोस्ट्रोफ है, ठीक है, और एक विद द एपोस्ट्रोफ है। जो विदाउट द एपोस्ट्रोफ है इट्स, वो एक पोजेसिव फॉर्म है, इंडिकेट करता है ओनरशिप, जबकि इट्स वो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, इट इज अ ब्यूटिफुल डे। यूजुअली एकेडमिक वोकैबुलरी फॉर्मल एक्सप्रेशन में हमें हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है कि हमें कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने होते। तो कॉमन मिस्टेक है कि हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि यहाँ पे इट्स आएगा विदाउट द एपोस्ट्रोफ या इट्स विद द एपोस्ट्रोफ। इट्स विद द एपोस्ट्रोफ शो करता है इट इज, जबकि इट्स विदाउट द एपोस्ट्रोफ शो करता है एक पोजेसिव फॉर्म। राइट, सिमिलरली लेट्स एंड लेट्स। ठीक है, जो विदाउट द एपोस्ट्रोफ लेट्स है वो लेट का प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और जबकि लेट्स इज लेट अस, लेट अस को एपोस्ट्रोफ वाला लेट अस को शो करता है। यहाँ एपोस्ट्रोफ का मतलब है there is a alphabet which is missing but that is understood. Clear? So this was about your punctuation marks, right? पर प्लीज रिपीट कीजिए ये वाला पंचुएशन हाँ जी, मिस्टेक वाला। या इसमें है, हम आगे सम अप कर रहे हैं कि पंक्चुएशन के यूजेज से क्लैरिटी और मीनिंग आता है। मेजर जो पंक्चुएशन मार्क्स है, पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई एक्साइटमेंट, कोई सरप्राइज हम शो करते हैं, सेमीकोलन, डू गुड, हैव गुड, जब दो कंट्रास्टिंग चीजों को हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क जो है वो डिफरेंट पर्पस होता है उसका, और उससे जो इंटेंडेड मीनिंग होता है बहुत क्लैरिटी से शो हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। जैसे लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, तो हम ग्रैंडमा को कह रहे चलो ग्रैंडमा हम खाना खाए, जबकि बिना अगर हम कॉमा के बोलते लेट्स ईट ग्रैंडमा, उसका मतलब होता है लेट अस ऑल ईट ग्रैंडमा। ठीक है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सॉरी करेक्ट पंक्चुएशन के बहुत फायदे हैं, बिकॉज इससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मिस इंटरप्रिटेशन और कंफ्यूजन भी नहीं होती है। सो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए द यूजेज ऑफ पंक्चुएशन करेक्टली in all our writings, whether we are professional writing, that is email, report, या हम कोई क्रिएटिव राइटिंग, कोई पोएम, कोई शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज इन academic writing. So I hope it is clear to you. Yes. Yes, ma'am. Yes, To ma'am. all the batches, to all the batches. So we were talking about the usage of punctuation marks in academic writing. Don't worry, हमारा Excel जो है attendance का during the classes बनता रहता है।
ठीक है. So this was it. I hope there has come some clarity about the subject, about the syllabus, and about this topic, right? Yesterday there was some network issue. I could not complete the class, so today I will try to share both the PPTs with you. Punctuation की मैं देखती हूँ अगर ये share होती है, कई बार ये punctuation वाली जो PPT है ना, it goes as a link. सो देयर इन फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि गिव एक्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई विल बी शेयरिंग द इंडक्शन पीपीटी एंड पंक्चुएशन. द lecture has already been shared. You can go through it. So good. We are meeting on coming Saturday at 2:15, and please complete your assignment by that time. Right? So bye bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Right. Thank you so much, Ria. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.